Yeah. Hello everyone, my name is आइंदी चक्रवर्ती. मैं यहाँ हूँ on behalf of Let's Shoot English Master जी. आज मैं आपके सामने कुछ phrases and idioms लाने वाली हूँ. Phrases and idioms क्या है वो होता है कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुहावरे and लोकत्य. तो क्या आप लोग को पता है ये कहाँ पे यूज करना है आपको या कहाँ पे इसका यूज होता है? The thing is, phrases and idioms या मुहावरे आपके यूजेस आते कहाँ पे? ये आएंगे आपके यूज जहाँ पे आप प्रोफेशनली बोलोगे किसी के साथ या पर्सनल लाइफ में भी आप यूज करते हैं. बट राइट नाउ मैं इतने phrases लाई हूँ जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएंगे. So what are phrases and idioms? Let's start with it. Hello Shreya. Okay. Phrases are a group of words which are not complete sentence. यानी कि phrases वो होते हैं जो group of words है लेकिन वो पूरा sentence नहीं बनता है. वो सिर्फ एक words के इकट्ठे होते हैं. So those are called as phrases. Idioms are phrases which have a figurative meaning. Figurative मतलब word by word अगर हम समझे तो उसका कोई मतलब नहीं है. So it is just a hypothetical thing. एक मतलब जो उसका अंदर में उसका हिडन मतलब होता है लेकिन जो वर्ड्स दिखते हैं हमें उसका एक्चुअल मीनिंग वो नहीं होता है. सो टू रैप अप, phrases and idioms are nothing but they are a group of words with symbolic meaning. यानी कि जो वर्ड्स है उसका लिटरल मीनिंग नहीं है बट उसके अंदर कुछ छुपे मीनिंग्स होते हैं. सो हियर इट आई स्टार्ट द फर्स्ट phrase and idioms. Here I go. The first one straight arrow. सुना होगा सीधा तीर. अभी स्ट्रेट एरो अगर मैं बोलूं तो स्ट्रेट एरो सीधा तीर निकलता है हिंदी में लेकिन इसका कोई आईना मतलब नहीं होता है. बट इन इंग्लिश स्ट्रेट एरो मीन्स एन ऑनेस्ट पर्सन. सो इफ आई हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस आई कैन से मिस्टर शर्मा इज अ स्ट्रेट एरो. यानी कि मिस्टर शर्मा बहुत ईमानदार इंसान है. इज अ ऑनेस्ट पर्सन. ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन. Next is toe the line. Toe the line means follow the rules. Follow the rules. जब हम simple language में बोलते हैं you need to follow the rules. But I can also say you need to toe the line to be associated with this organization. अगर आपको इस organization में रहना है तो आपको rules follow करने पड़ेंगे. तो rules follow करना पड़ेगा. In the sense toe the line. Next is sink or swim. तैरो या डूबो. Now, when I'm saying that, sink means fail or succeed. So, sink or swim के जगह आप fail or succeed बोलते हो common language. For example, this project will help me to either fail or succeed. Instead of that, this project will let me sink or swim. Correct? Next is smell a rat. Smell a rat, चूहे को नहीं, चूहे को हमें किसी के चूहे की खुशबू लेनी नहीं है, बू नहीं लेनी है. सो स्मेल अ रैट मीन्स समथिंग विच इज फिशी. कहीं पे कुछ काला है. इन हिंदी विच वी कॉल एज दाल में कुछ काला है. When I saw my manager giving me a sweet smile, I thought that is I smelt a rat. You know, that is something which I felt that कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कहीं पे कुछ fishy है. Next one comes as heavy hitter. हैवी हिटर मतलब एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन जिसकी पहुंच बहुत लंबी है, जिसका लंबा हाथ है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अंबानी इज अ हैवी हिटर यानी कि इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन. सो दिस आर द फर्स्ट सेट ऑफ फ्रेजेस एंड इडियम्स दैट आई हैव प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए सो प्लीज बी फ्री टू आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन or else as per your choice frame sentences with any 2 or 3 of it. Yes, waiting for some sentences from your side. Shreya? Yes, who else? Straight arrow means an honest person. Toe the line means to follow the rules. Sink or swim means fail or succeed. Smell a rat is to smell something wrong, something kahin garbad hai. Heavy hitter means an influential person जिसकी पहुंच बहुत लंबी है. So please frame sentences and if you have any queries on this first 5, please be free to ask. Hello all of you. He is a straight arrow. That's correct. Anyone else? Rahul? Beauty guide. She lost out on the promotion because she was a straight arrow. Absolutely correct, Natasha. Something else with toe the line or smell a rat, heavy hitter.
Yes. Anyone else? Waiting for some responses. Okay. So then I go to the second list of next 5 phrases. Next one is it won't fly. It won't fly means it won't be approved or accepted. My leave application won't fly. That means it wouldn't be approved. मेरे leave application को approve नहीं किया जाएगा. Won't fly means it will not be accepted or approved. Next comes lion share. Lion share मतलब एक बड़ा हिस्सा. किसी भी चीज में जब हमें कुछ बड़ा हिस्सा मिलता है, that is called as a lion share. I get a lion share of my pizza in my birthday party. I got a lion's share of my dad's property. So lion share is a big portion. कहीं का भी बड़ा एक हिस्सा मिलता है आपको, that is called as a lion share. Next comes hard nut to crack. हार्ड नट टू क्रैक यानी कि जो इंसान या जो भी प्रॉब्लम हमें डिफिकल्टीज देते हैं या जो हम आसानी से सॉल्व नहीं करते हैं, या कोई जैसे हमारे सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं खड़ूस, अगर वो इंसान खड़ूस है तो वो उसको भी हम बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक. दिस प्रॉब्लम इज अ हार्ड नट टू क्रैक. ये प्रॉब्लम बहुत कठिन है या बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए ये सॉल्व करने में टाइम लगेगा. और यू कैन से रवि इज अ हार्ड नट टू क्रैक. ही विल नॉट गेट कन्विंस सो इजीली. रवि बहुत troublesome इंसान है जो इतनी easily convince नहीं होगा. So that time you can use the word hard nut to crack. Next comes butterflies in your stomach. Butterflies यानी तितलियां, तितलियां आपके पेट में. But why? Butterflies in your stomach means feeling nervous. हम normal language में बोलते हैं I am feeling nervous. Instead of that, I can say also butterflies in my stomach. For example, whenever I go for interviews, I have butterflies in my stomach. So that is the time you feel I feel nervous. That time you can use the phrase butterflies in your stomach. Next comes work like a dog. कुत्ते की तरह मेहनत करो. That's a it's a very common thing जो हम हिंदी में बोलते हैं, कुत्ते की तरह मेहनत करो यानी बहुत मेहनत करना. So in corporates people work like dogs. यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, कॉर्पोरेट में लोग बहुत मेहनत करते हैं. So people do hard work in corporates. Instead of that, मैं ये भी बोल सकती हूँ in corporates people work like dogs. Okay, so these are the next set. Again, any difficulties, please be free to ask questions, more explanations. I will be helpful to you all. Or, yeah, sentence banaiye, any as per your choice. Okay, right one. The boy is such a hard nut to correct. I think this business of yours won't fly. Okay, correct. Shah Rukh Khan is a heavy hitter, right? You have to toe the line or else you'll be out. Perfect. Yes, who else? Who will frame with lion share? Just try framing with lion share. Anyone who would like to share the sentence with lion share? Anyone? Yes. That's correct. I ate a lion's share of the cake. I got a lion's share of this pizza. Very good, Shreya. The right one. Next. What about the others? Work like a dog. Anyone with work like a dog? Okay. Right one, Shriram. Maruti company has lion's share. Lion's share in this case, Shriram, you missed on the apostrophe. So that is lion's share in market. In the market specification. Yes, someone with work like a dog.
He works like a dog every day. Correct. He works like a dog. Good. Shreya and Ash, grade 24. Okay. Should I go ahead, or you have still some questions to ask regarding this first 10 phrases? Is this clear to all of you? I am having butterflies in my stomach. Shreya, this is correct. I'm having butterflies in my stomach, but you need to specify कब या कब होता है या कब हुआ था या कब होने वाला है, whatever. So you have to complete कि I have butterflies in my stomach is right, but कब? Okay, Shreya. So Shreya, try to complete. Okay, I am having butterflies in my stomach as I am going for my interview, something like that. Okay. Okay, no doubts. Fine. So then I go to the next 5. Okay. The next 5. Next is grab the bull by the horns. यानी कि ये कब यूज होता है फ्रेज? फॉर एग्जाम्पल हम छोटी छोटी बातों को लेके उसी के पीछे घूमते रहिए, नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये क्यों होगा. सो इंस्टेड ऑफ इतने सारे क्वेश्चंस के पीछे भागने से अलावा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान दो और उसको सॉल्व करो. सो दैट इज द टाइम वी यूज द फ्रेज ग्रैब द बुल बाय इट्स हॉर्न्स. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ नैगिंग, जस्ट ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. खाली फिली पैच पैच कर ना इस तरह से मत पीछे पीछे कचर कचर मत करो, जो है प्रॉब्लम को समझो और उसको सॉल्व करो. सो दैट इज द टाइम यू यूज द फ्रेज ग्रैब द बुल बाय इट्स हॉर्न्स और बाय द हॉर्न्स. Next is green as grass. Green as grass can be told to someone who is inexperienced, who is an amateur. Amateur matlab fresher. For example, Nidhi is green as grass for this project, is inexperienced, does not have an experience, does not have a training. So Nidhi is green as grass for this project. इस project के लिए Nidhi एकदम inexperienced है. Okay. Crunch time. Crunch time means a critical moment or a period. बहुत महत्वपूर्ण वक्त. If I have to get promoted, this is my crunch time. अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो ये मेरे लिए बहुत क्रूशियल मोमेंट है कि मैं काम करूं. That I work hard or I work like a dog. So if I have to get promoted, this is my crunch time. So I need to work like a dog. यहाँ पे मैंने दोनों फ्रेज का इस्तेमाल किया है. Correct? Next is cut corners. That means taking shortcuts. कहीं पे भी पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है, कोई लॉन्ग कट्स का इस्तेमाल करता है, राइट? सो इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस, कटिंग द कॉर्नर्स इज नॉट द राइट स्टेप. Cutting the corners means taking shortcuts is not the right step. Next is hell and hearty. Hell and hearty means you are well. Well मतलब good in health, तंदुरुस्त. ये आप ओपनिंग लाइन लिख सकते हो जब आप ईमेल्स लिखते हैं. Instead of saying hello sir, how are you, I hope you're doing well, instead of saying that आप ये भी बोल सकते हो, hello sir, I hope you are hell and hearty. So this can also be used अगर आपको I am doing fine, instead of that आप ये भी बोल सकते हो I am hell and hearty. I hope you're doing well, I hope you're hell and hearty. So that means to be in good health. Okay, these are the next 5. As usual, if any questions, please ask, and if possible you can use 2-3 phrases, 2-3 phrases एक साथ करके भी आप sentence बना सकते हो. Okay, like how I used in crunch time and work like dog. Okay, so I give you some time to frame sentences using these phrases. Stop whimpering and grab the bill. That's great. Before my interview, I was having butterflies in my stomach. Correct, Shreya. Very good. News reporters work like dogs. श्रीराम, in this case reporters मतलब एक से ज्यादा, तो आपको यहाँ पे apostrophe s नहीं लगाना होता है. apostrophe s का मतलब तभी होता है हम जब किसी का या किसी की के लिए इस्तेमाल करते हैं. रिपोर्टर्स के अगर आप ये रिपोर्टर्स के कैमरा हैं, so that time you can add the word apostrophe s. अगर आप एक से ज्यादा रिपोर्टर्स बोल रहे हो तो apostrophe s लगाने की जरूरत नहीं है. Okay, Shriram, I hope it is clear. I hope this session is helping you.
In order to learn more about English grammar and spoken English, please go and visit our website, and the descriptions are given here in the box down. We give free courses in spoken English as well as in grammar. Yes, और कोई? Something with Helen Harty? Or green as grass? It's green as grass for this experience. For this, correct, Shreya. Shreya, I hope these are helping you. Neelam, wow, good. Hello, Neelam, how are you? Sing out of my college, I was as green as grass in my career. Very good. Correct, Neelam. Yes, someone else? Someone with Helen Harty and crunch time? Yes, crunch time or Helen Harty? I'm also good, Neelam. Thank you. Neelam, I hope this is helping you. These phrases and idioms are helping you. My grandmother is Helen Harty. Correct, Shreya. Constant for me, do not disturb. This is also correct. Very good, Shreya. A lot of good sentences. Yes, anyone else with any other? Why don't you use two phrases together? Thank you, Neelam. Yeah, why don't you use two phrases? दो phrases मिला के कोई sentence बनाओ. कोई भी पहले के 10 में से कोई एक और अभी के 5 में से कोई एक. Try it out. अगर कोशिश करो अगर हो सके तो. Like I framed, this is a crunch time for me, so I need to work like a dog. The 20s is a crunch time for everyone's career development. That's a nice one, Natasha. Yes. Any more, or should I go to the next 5? This is a crunch time for me. I have to cut corners. Okay, that's a nice one. Very nicely framed, Shreya. Good one. Okay, so I better go to the next 5 then. Okay, let's go to the next 5. Okay. Next comes rack your brain. ये बहुत commonly used होता है. Rack your brain. Think very hard. दिमाग को चलाओ. हिंदी में बोलते दिमाग चलाओ. जब हम दिमाग चलाते हैं हम literally उसको चलाते नहीं है. So we say that think. सोचो. So that's called as rack your brain. To solve this problem, you need to rack your brain. Okay, next is teething problems. हम जब छोटे होते हैं, जब हमारी दांत निकलती है, जो डिफिकल्टीज हम बच्चों को फेस करना पड़ता है, कभी बुखार, कभी पेट दर्द, एक्सेट्रा. सो teething problems are exactly that. They are the first problems which we come across, जो हम फेस करते हैं जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं. To make this business successful, I had to go through lot of teething problems. ये business को successful बनाने के लिए मुझे बहुत से teething problems को face करने पड़े या उनसे गुजरना पड़ा मुझे. So teething problems are the starting problems which we face to start anything new. Okay. Next comes black and white. Black and white means everything that is clear. सब कुछ साफ सुथरा है. That is called as black and white. I hope my explanation is black and white. I hope, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको explain कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है. Everything is clear. So that is the time we say black and white. Next is flying high. That is becoming successful. With his lot of hard work, Ravi is flying high. With lot of hard work, Ravi is flying high means Ravi is becoming successful. वो successful हो रहा है धीरे धीरे. Next is riding high. Riding high मतलब enjoying success. Flying high मतलब successful बन रहा है.
राइडिंग हाई मतलब सक्सेसफुल बन चुका है तो उसको एंजॉय कर रहा है. सो Ravi is riding high with his success. He is enjoying his success. So that is the time we use the word riding high. Okay. Again, questions, frame sentences, और अगर जरूरत पड़े तो 2-3 मिला के भी आप फ्रेजेस यूज कर सकते हो. दिस फ्रेजेस की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, दोज आर नॉर्मल इंग्लिश, बट दीज आर द इंग्लिश विच विल हेल्प यू टू स्पीक इन कॉर्पोरेट इंग्लिश या बिजनेस इंग्लिश के लिए भी ये होता है. Right? So these are the phrases which will help you to be more efficient. जब आप emails लिखते हो या जब आप किसी के साथ communicate करते हो, these phrases will surely help you, provided you apply it properly. Okay? So please frame sentences with any of these as per your choice. Okay. That's a nice one, Shreya. Sweet one. Anyone else? श्रेया, डू यू थिंक इसमें आपको कोई डिफरेंसेस लग रहे हैं जब आप ये 2 सेंटेंस बना रहे हो, 2 फ्रेजेस यूज करते हुए? Neelam, in this case, I was teething many problems while beginning my career. No, I was facing many teething problems. I was facing many teething problems while beginning my career. मैं फेस कर रही थी. So I was facing many teething problems. Okay, good. Shreya and Neelam and others, Sriram. I have racked my brain for all these teething problems. To solve all these teething problems, Shreya, I have racked my brain to solve all these teething problems. मैंने बहुत सोचा ये शुरुआत के डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए. Okay, so I have racked my brain to solve all these teething problems. Yes, any more? Okay. Yes, someone with black and white. If someone can frame with black and white. Yes, if someone can frame with black and white. Perfectly framed. I hope everything is black and white to everyone. Very good. Neelam, anything from you for black and white? Yes. I see many of you seeing. Please write something which will help me to understand कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. जब तक गलतियां नहीं करोगे सीखोगे नहीं. करेक्ट. सो हिचकिचाओ मत, लिखो जो आपको मन में आ रहा है. प्लीज राइट द सेंटेंसेस. black and white in front of the cops. Correct. Don't put question mark. नीलम question mark नहीं आएगा. अगर question बनाना है then it will be did I make? Did I make everything clear, everything black and white in front of the cops? That time it will be question mark. Black and white in front of them. Correct. Okay, नीलम अगर आप question बना रही हो तो उसे did से start करना. Did I make everything black and white in front of the cops? Or instead of saying make also you can say did I tell? Did I tell everything black and white or was I clear? Life is not black and white. Perfect, Mary. Hello, Mary. First time I see you. Yes, someone with... what about the other one, flying high or riding high? Something with flying high or riding high, either of it. Or you can also combine the two.
You can also say if you solve all your teething problems, I'm sure you will be flying high. Right? अगर आपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए तो आप श्योरली सक्सेसफुल हो जाओगे. Yes. Anyone else, or should I go ahead? Okay. Next, let's go to the next one. Okay. Right hand man. Right hand man means a helpful person or a very important person who helps someone. You know, जैसे secretaries होते हैं, so they can be called as a right hand man of any boss or anyone. They, you know, executive assistant is a right hand man of a boss, right? So Miss Shirley is a right hand man for Mr. Sharma, right? Right hand man means a person who is helpful or an assistant to someone. Okay. Next comes take 5. Take 5 means take a short break, take a break. So if I'm saying take a short break, I can also say take 5. I think you're too tired, you can take 5. मतलब मुझे लगता है कि तुम थक चुके हो, so why don't you take a short break? So that time you can use the phrase take 5. Next comes swimming against the tide. यानी कि जो दूसरे कर रहे हैं मैं उसके अलावा कुछ कर रही हूँ. I'm not towing the line, so I'm not following the rules. So herein I can say the swimming against the tide. I am not in the habit of swimming against the tide. मुझे आदत नहीं है दूसरों के अलावा कुछ और करने की. जो सब करते हैं मैं भी वही करती हूँ या करता हूँ. So swimming against the tide means, or you can also frame it like this, very few people have the guts to swim against the tide. राइट बहुत कम लोगों को हिम्मत होती है दूसरों जो करते हैं उनके अलावा कुछ हटके करने का. सो दैट इज द टाइम यू कैन फ्रेम द फ्रेज स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड. नेक्स्ट कम्स स्पिट इनटू द विंड. Spit into the wind means to do something which is pointless, illogical, meaningless. Okay, instead of nagging, why don't you spit into the well? Instead of nagging ki dada, instead of doing something pointless, you can also say this way, instead of what do I say, instead of sitting idle and spitting into the wind, do something logical. सिंपल ऐसे बैठे रहने से और कुछ भी फालतू की चीजें पॉइंटलेस बोलने की या कुछ करने के अलावा कुछ काम का करो आप. Next comes taking the high road. Taking the high road means to take the path which is morally right. यानी कि उस राह में चलो जो आपको सच की तरफ ले जाए या सच्चाई के राह पे चलो. That is called as taking the high road. An honest person, or you can also say a straight arrow. A straight arrow always takes the high road. It's a combination of those phrases जो मैंने first दिखाया था. Straight arrow, an honest person always takes the high road, always takes the रास्ता जो हमेशा सच की तरफ, morally right की तरफ ले जाए. So herein again I have combined with a straight arrow as well as taking the high road. Okay, so herein again, as per your choice, frame sentences, and any questions please be free to ask in the comment section. SRT is flying high on the success of Pathan. Yes, correct. She keeps everything black and white. Correct, Prachi, Shreya. He's my right hand man. Correct. Morally upright is like swimming against the tide. Absolutely. Very nice sentence, Mary. Very good. मजहर आपने लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट कैन बी यूज समथिंग डॉक्यूमेंटेड. ये आप जरा क्लियरली बताएंगे मुझे क्या आप बोलना चाहते हो आप. Stop spitting into the well. This is a crunch time for everyone. Absolutely correct, Shreya. Very good. Use of two phrases. और जब आप लिखते भी हो ऐसे और जब बोलते हुए सुनने में भी अच्छा लगता है और उसका एनहांसमेंट भी समझ में आता है इंग्लिश में. दैट इज इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर इन अ कॉर्पोरेट लैंग्वेज एज वेल एज इन अ बिजनेस इंग्लिश. Yes, something else? Yes.
मज़हर, आप क्या बोलना चाहेंगे? प्लीज़ फिर से बोलोगे आप? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप पूछ रहे हो या कुछ। प्लीज़ बी फ्री टू आस्क, मतलब we have been working like topic 5. Perfect. Shreya, quite impressive. Perfect. नीलम, सी इन दिस केस सेंटेंस वाइज करेक्ट है, एप्लीकेशन भी करेक्ट है, लेकिन लॉजिकली आप बोलो तो क्या पेरेंट्स आपके हेल्पिंग हैंड हैं या समवन हु आपके असिस्टेंट हैं? इट इज नॉट लॉजिकल एज ऑफ नाउ. पेरेंट्स कभी असिस्टेंट तो नहीं हो सकते ना. दे कैन हेल्प यू टू योर इन योर वर्क, आपको मदद कर सकते, बट वो असिस्टेंट नहीं हो सकते आपके. राइट हैंड मैन कैन बी मोस्टली यूज्ड इन योर प्रोफेशनल लैंग्वेज. पर्सनल सेंटेंसेस में कम ही यूज होंगे क्योंकि कोई पर्सनल लाइफ में कोई असिस्टेंट नहीं होता है. Okay, Neelam? So right hand man is majorly used in the this professional way. Yes, correct. Prachi. Combination of any 2, 3. You have to toe the line. Don't swim against the tide. Perfect, Shreya. You have to toe the line. Don't swim against the tide. Perfectly framed. Yes, some more. Application of two phrases together, like how Shreya is doing. And even Prachi, I see Prachi doing it. Shreya is also there. I joined through my mobile. How can I connect you? For this thing, Mazhar, we have, for the further, what do I say, for the further notifications of the coming live sessions, you have to join the WhatsApp group, which is given in the description box. The number is in the, link is sent there. So you need to join the WhatsApp group to get the further notifications of the live sessions, which comes on every Saturdays. Yes, it's quite interesting, Shreya. And it, not only that, it enhances the sentence framing and it also shortens the length of your sentence. मतलब इतना बड़बड़ बड़बड़ करके इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत ही नहीं है जब ये दो phrases काम कर रहे हैं हमारे लिए. तो यहाँ पे spoken English courses के लिए, you have to able to answer so tune. That's good. और ये माइंड दैट ये फ्रेजेस आप लोग ईमेल राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं एज एंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड. मज़ार, आपको इन्फॉर्मेशन मिला? अगर आपको ये लाइव कनेक्शन के लिए यू हैव टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दिया रहेगा हमारे सेशन के नीचे. तो आप वहाँ पे क्लिक कर लेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लोगे एंड आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. Yes, some more. Neelam, Prachi, anyone else, or should I go ahead? Okay, so let me go to the last 5. So this is needed for me because for even the smallest things I tell a lot for it, so I want to learn this one. That's very good. So now I hope this, the next 5 that includes 30 phrases and idioms that I'm going to complete today, जो आज मैं complete करने वाली हूँ, वो आपको help करे. और please, practice makes a man perfect. जितना practice करोगे उतना ही आप सबके लिए helpful रहेगा. और क्या होता है श्रेया, अगर आप ज्यादा बोलोगे तो गलतियां करने की चांसेस होते हैं. So इससे अच्छा कम बात करो, पूरा पावरफुल मीनिंग बोलो and end the conversation. Okay, so let me go to the next. Okay. Next comes not have a prayer. Not have a prayer means there's no chance of succeeding. Chance ही नहीं है सक्सेस पाने का या सक्सीड करने का. Not have a prayer.
Next is fox in the hen house. Jo, someone who causes trouble. For example, Sheetal is a fox in the hen house. That means Sheetal is a person who creates problem in the group. So herein I can say Sheetal is a fox in the hen house. Okay. French leave. French leave means absence without permission or secret departure. यानी कि बिना परमिशन लिए अगर आप छुट्टी लेते हो या चले जाते हो या कुछ बिना बताए किसी को कहीं पे भी आप छुट्टियां लेते हो, that is exactly which is called as French leave. This is the last time Kumar will be forgiven for the French leaves that he take. So this is the last time for which Mr. Kumar will be forgiven for all the French leaves that he takes, right? Next is making one's mark. Making one's mark means एक धब्बा छोड़ना, एक पॉजिटिव पहचान बनाना दुनिया में, एक recognition मिलना in the market or even in your career, etc., or even in your group, anywhere. So with all his hard work and his success, Kiran has made his mark. Now here in once you can also change to his and her or their, THEIR there. You can change the pronounce, पर जैसे pronounce को आप change कर सकते हो. So with all the hard work, Kumar has made his mark in the organization. And the last one for the day is hit the ground running. Now, what do I mean by hit the ground running means there is no training. You don't have, आपके पास कोई training नहीं है इस project के लिए, इस काम के लिए, जिसके लिए आपके पास कोई training नहीं है. For example, many interns in the lawyers group are just hit the ground running. बिना कोई practice के, बिना कोई training के, just एक certificate मिल गया वो खड़े हो जाते हैं court में. So that is what is called as hit the ground running. Right? So these are the last 5 which was remaining, and now you can frame sentences using all the group, whatever comes to your mind, frame sentences, and any questions and any queries you'll be free to ask here. Yes, my house always takes French leaves. Yes. The sooner it gets the tide, you don't have a prayer. Correct, Shreya? And also, I would like to tell you all that Let's Tute Institute also gives business mastery courses, which includes DST, Excel, Tally, accounts and business English also. So please be free to click the website and get the details, wherein these are all free courses which will be available to you, and it will be also helpful for you to get yourself ready for jobs. Shreya, in this case, even though he hits the ground, S, because you have framed a sentence in present tense. Natasha, working in my previous organization was like hitting the ground running. Okay. So all of you can please join the WhatsApp group for the further notifications of all this upcoming lives. Yes, some more. Correct. Shreya, good one. Very good, Neelam. So Neelam, are these phrases helping you? कैसा लग रहा है इसको यूज करते हुए सेंटेंस बनाना? यस नताशा. यस नीलम, कैसे लग रहा है आपको फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाना? ग्रेट. ओके. अगर मैं ऐसे एक रैंडमली सेंटेंस बनाऊं
with a dash, with a filling in the blanks, I want you to fill up the right answer using the right phrase as whatever comes to your mind at the right phrase, right? For example, should I start that? Thank you, Neelam. एक एक्टिविटी करते हैं जहां पे मैं जस्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स करके बोलती हूँ, आपके हिसाब से आपको कौन सा फ्रेज यहाँ पे सूट होगा उस हिसाब से आप जवाब लिख के बताओ मुझे, ठीक है? हाँ, this is a nice one, Shreya. My right hand man is a fox in the hen house. Perfectly framed. See, you know, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलोगी मेरे असिस्टेंट वो ये कि यू नो इज अ पर्सन जो ऑलवेज प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऑलवेज क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, इतना लंबा चौड़ा बोलने के जरूरत, माय राइट हैंड मैन इज अ फॉक्स इन द hen house. ठीक है, एक्टिविटी करें, ऑल प्रिपेयर्ड, रेडी? Okay, should I start with the activities? Fine. Okay, the first sentence which I tell you is with a dash is, see, I don't have a PPT for that, but I'm just going to tell you verbally. I'll repeat this question again and again. Okay. The first one is, it is not necessary, I repeat again, I start, it is not necessary to get success with the help of a dash. It is not necessary that you become successful. Also, you can say it is not necessary that you get success with the help of a dash. What will it be? It is not necessary that you will get success with the help of a dash. What will be the phrase that you can use here? Again, I repeat, it is not necessary that you will get success with the help of a dash. Right hand man means a person who helps someone, who is an assistant. Then can he be addressed as no, fox in the hen house सागर means जो इंसान ट्रबल बन करता है ग्रुप में या कहीं पे भी, जो काम नहीं करता है, जो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है. No, Shreya, not right hand man. Think properly. It is not necessary that you get success with the help of a dash. राइट हैंड मैन तो आप ही का इंसान, यू नो, आप ही के जान पहचान वाला होगा जो आपको असिस्ट करेगा वगैरह, तो इसमें राइट हैंड मैन की हेल्प है. नो, नॉट कटिंग द कॉर्नर्स. सी, इफ इट वाज कटिंग द कॉर्नर्स नीलम, फिर मेरा सेंटेंस होता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू कैन गेट सक्सेस विद डैश. यहाँ पे मैं विद द हेल्प ऑफ डैश बोल रही हूँ. सोचो क्या हो सकता है. It is not necessary that you will get success with the help of a dash. With the help of a dash. Hint do? Should I give you all some hint? Okay, the phrase comes in the first part. First 5 में से एक है. First 5 में से कोई एक है. No, not spitting in the air. It is heavy hitter, an influential person. Answer is an influential person. It is not necessary that you will get success with the help of a heavy hitter. That is with the help of an influential person. The last one of the fifth. Okay. Heavy hitter. Yes, Shreya, heavy hitter. Correct. Now, if I tell you a phrase which is like, okay, next one I tell you is, I don't get much time. I don't get much time to be with my family as I dash in my office. I don't get much time to spend with my family as I dash in the office.
Again, I repeat, I don't get much time to be with my family as I dash in the office. What can it be? Correct, Shreya. Work like a dog. Perfect. Shreya is a good answer. Right one. Okay. Now next one. Okay. Okay. When I see my colleague helping me out of the way, I dash. When I see my colleague helping me out of the way, I dash. When I see my colleague helping me out of the way, I dash. Yes, again I repeat, when I see my colleague helping me out of the way, I dash. Correct, Ash Gray, 24. Smell a rat. I smell a rat. Okay. Next one. Okay. Smell a rat. Correct, Neelam. Smell a rat. Okay. Next one is I got a dash of the property from my father. I got a dash of the property from my father. I got a dash of the property from my father. Correct, Neelam. Lion's share. Perfect. Rightly said. Yes. Lion's share. Correct, LJS. Correct one. Okay. Next one. Okay. Okay. This is not included in the slide. Can anyone tell me, lion's share, correct, Sagar? Okay, can anyone tell me, अगर मुझे जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है तो हम नॉर्मली बोलते हैं इट इज रेनिंग हेविली. ओके, किसी को पता है ये रेनिंग हेविली की जगह क्या फ्रेज एंड इडियम्स यूज हो सकता है? एनी आइडिया? फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं इट इज रेनिंग हेविली. ये रेनिंग हेविली की जगह कुछ अच्छा बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं हम? एनी आइडिया अबाउट इट? Okay, it's called as raining cats and dogs. It's called as raining cats and dogs. Raining heavily मतलब raining cats and dogs. In Mumbai, when raining की जगह आप rain भी कर सकते हो because raining is a verb, so you can use it in any form. So in Mumbai, it rains like cats and dogs. So raining heavily means raining cats and dogs. Correct. It's pouring. No, raining cats and dogs. Correct, Shreya. Okay. Okay, what do you tell for हाथ पैर ठंडा होना? हाथ पैर ठंडा होना. I'm telling you the Hindi version of the English one. So what can you tell for हाथ पैर ठंडा होना? जैसे फीलिंग नर्वस के लिए हमने बोला बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, उसी तरह हाथ पैर ठंडा होने को क्या बोल सकते हैं हम? Nervousness is a word, but if I have to ask you, सागर, एक फ्रेज के बारे में पूछ रही हूँ मैं, मुहावरे की तरह आप कैसे बोलोगे? जो हाथ पैर ठंडा होना जो हिंदी में हम बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम बोलेंगे नो. एशक्रे, फिंगर्स एंड टोज आर गेटिंग कोल्ड. नो. फीलिंग नम. नो. These are all words. I'm talking of the phrases. So हाथ पैर ठंडा होना means to develop a cold feet. To develop a cold feet. This is the first time I'm going to go and speak on the podium. I am developing a cold feet. मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं. This is the first time I'm going to on the podium to speak. I am developing a cold feet. No. So developing a cold feet मतलब मेरे हाथ पैर ठंडा होना. Okay. Right? Next one. If I tell you over the head, इसका मतलब क्या होता है? Over the head. When can I use this phrase over the head? Anyone? Over the head.
Yes, anyone. Over the head. ओवर द हेड कैन बी यूज जब मैं बोलना चाहूंगी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. अगर आप लोग को कुछ अभी मैं जो बोल रही हूँ आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू ऑल कैन से वॉट एवर यू आर टेलिंग इज गोइंग ओवर माई हेड. आप जो भी बोल रहे हो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है. सो दैट मीन्स आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड. ओवर माई हेड, ओवर द हेड इज दैट कि कुछ समझ में ना आना. Yes, what teacher is explaining is going over. Is it true, Sagar? जो भी मैं explain कर रही हूँ is going over your head? Sagar? Yes, when you don't understand, Shreya. Sagar, I hope it is not the fact. समझ में नहीं आ रहा है आपको सचमुच? His explaining is going over the head. Okay. Okay. Next one, if I okay, Sagar. Okay. Next one, अगर मुझे बोलना है, for example, आप लोग ने सुना है गिनी पिग? Have you heard of this गिनी पिग? सुना है ये? Thank you, Sagar. सुना है what is गिनी पिग? गिनी पिग मतलब सफेद चूहा. सफेद चूहे को हम बोलते हैं गिनी पिग. यहाँ पे सफेद चूहा और गिनी पिग का क्या कनेक्शन है? गिनी पिग को हम इस तरह से यूज करेंगे कि वो फ्रेजेस जैसे लगे ना. गिनी पिग मतलब सफेद चूहा जो साइंटिस्ट यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए. करेक्ट. सो गिनी पिग इज एन एनिमल, सफेद चूहा जिसको हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं. लेकिन हम फ्रेजेस एंड इडियम्स के लिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई कैन से व्हेनेवर देयर इज अ न्यू प्रोजेक्ट माय बॉस मेक्स मी हिज गिनी पिग. जब भी कोई नया प्रोजेक्ट होता है वो मुझे दे देते हैं एंड आई एम द वन हु हैज टू गो थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट. ओके. या फॉर एग्जांपल व्हेनेवर माय मदर कुक्स समथिंग न्यू आई एम हर गिनी पिग. जब भी मेरी मम्मी नया कुछ खाना बनाती है मुझे परोसती हैं तो मैं उनके लिए गिनी पिग हूँ. एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, चलो आप पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. सो दैट इज द टाइम यू यूज द फ्रेज गिनी पिग. The spelling is Guinea-Pig. Guinea-Pig, guinea pig. Experiments. Yes. When you are being used as a media of experiments, so that time you are a guinea pig. Okay. बड़ी मछली का मतलब क्या होता है इंग्लिश में और कहाँ पे यूज हो सकता है एज अ फ्रेज? बड़ी मछली. What do you mean by badi machli and where can it be used as a phrase? Yes? Shreya, Sagar, Ash Gray, LJS, Neelam. What do you mean by badi machli? No, not big fish, not shark. Big fish, correct Shreya, big fish. Now where can you use this big fish? Big fish मतलब बड़ी मछली in the sense कोई भी organization, कोई भी sector, कोई भी stream में yes, Ambani is a big fish. Yes, correct. In this case, what dizziness interiors, okay? In this case, if you are tagging Ambani as a family herein, you may say Ambanis. Ambanis are big fishes. Okay, big fish. No, sorry, not big fishes, but big fish. Ambanis are big fish. Okay. No, Shreya. It doesn't mean like a lion. Shreya, big fish means a person who is well known in a particular sector of any organization or anything. Okay. Right. Next, if I tell you, how will you frame sentences with big fish in a small pond? What does this mean? Big fish in a small pond. Big fish in a small pond. बड़ी मछली छोटे तालाब में. हिंदी का ट्रांसलेशन ऐसे होगा तो. So what do you mean by big fish in a small pond? Big fish in a small pond as a phrase or idiom can be used wherein आप किसी person के ऊपर बोलते हो या बोल रहे हो जो अपने औहदे से कम पोजीशन में काम कर रहा है. जो अपने औहदे से कम पोजीशन में काम कर रहा है या एसोसिएटेड है, that person can be called as a big fish in a small pond. Yes, person who is very well known or important in a small group. In a small group, in the sense, you can say a person who is well recognized, Shreya, but he or she is working in a small organization which is not that well known.
Right now, for example, I can say Mr. Amitabh Bachchan is a big fish, and if I have to tell him that if he's working in some small movies or somewhere which is below his standard, so I can say that time that Mr. Amitabh Bachchan is a small, big fish in a small pond. Okay. So someone who works or who is associated with an organization, for a small time. Okay. So just hold on. So with this, again, I repeat that, again, you can avail all the free courses that are given from our side, wherein you will have free courses for spoken English as well as grammar, as well as for business mastery courses. So for all the details, you can go to the description box or click the link which is given. And also, अगर आपको further notifications मिलने हैं for the coming live sessions, please join the WhatsApp group which is also given in the description box. I hope आपका ये सेशन अच्छा लगा, आपको लगा होगा, and you all are happy and it is going to be helpful for all of you. Please give your comments to know your feedback. It would be very much necessary for me to help you all in a better way. Thank you very much.